Hello everyone, welcome back to EduTap. Myself Jalaj Nagpal, and today we have Mr. Manish Chandra with us. As you all know, RBI Grade B 2023 results, the final results were out, and today yet again continuing with our success story session. Today we have Mr. Manish Chandra with us. From the entire team of EduTap, Manish, first of all, congratulations, and we wish you all the very best. Thank you, sir. So, Manish, I will be talking regarding multiple things. Definitely, you are a very, I would say, motivating character for all the student community. First and the foremost thing, how's the feeling right now? Sir, I am feeling it's hard to describe, but Hmm, I am relieved because cool. that success has come after 2, 3 years. Definitely. So, I will start with multiple facets of your preparation. Again, take me to that particular day once you watched that PDF and your roll number appeared in that. What happened after that particular process? Sir, I was in Kolkata for NICL interview, Hmm. and I watched my result in a cab while going to railway Oh, station. yeah, yeah, yeah. So after getting notification from my friends on Hmm. Telegram that result has come, Hmm. and Hmm. Hmm. after that, first thing I do, I called my parents, informed them Yeah. of result, then sit down in the Howrah railway station only and Hmm. just soak in that moment for 5 minutes, 10 minutes. Cool. And that would have been the most beautiful moment of your life, right? Yes, sir. Cool. So, Manish, yet, like I will be talking regarding multiple things, but allow me to introduce you to my viewers. All the viewers, my friend, Manish is an epitome for hard work, for persistency, for consistency. His background definitely revolves regarding engineering, and then he has done, I would say, some attempts in UPSC as well. And if I'm not wrong, Manish, this was your third attempt in RBI, right? Yeah, yes, yes. Yes, so in the third attempt of RBI, he has cleared one of the most prestigious job in the banking industry, which is RBI Grade B. Manish, again, like, बहुत congratulations to you. But first, let's take the interview ahead. First, Okay. I want to ask you, like when you were preparing for UPSC, Yes, definitely that particular preparation would have helped you in RBI also. yes. So, in what domains? Uh, Sir, it's uh, तीनों फेज में हेल्प आता है. फॉर हाँ जी. एग्जाम्पल इन phase 1, through your preparation of CSAT, Hmm. in UPSC prelims, now the level of CSAT is increasing day by day. So Hmm. uh, that helps you in quant, Hmm. and not that much in quant, but mainly in reasoning. Okay. Because in RBI quant you have calculations and data interpretation. Those type of Yeah. questions UPSC normally not ask in, but it Okay. helps in reasoning. Okay. Especially one not a paragraph based question, but one line based question, Hmm. Hmm. just like that. Okay. And but with the main help जो मिलता है वो पार्ट 2 में मिलता है, वो Hmm. जब आप पहला इंग्लिश पेपर में ऐसे राइटिंग में, एंड Hmm. टू some extent precise writing also, because Okay. in UPSC mains there is also a compulsory English paper. There also Hmm. we Hmm. have to Hmm. write precise. What main help is in English paper is essay writing, because we write 100 to 1200 words, and here you have Hmm. to write type 600 words. Hmm. Hmm. And and then paper 2, economics and social issue. So the flavors of GS1 and GS2. Hmm. GS1 Hmm. they Hmm. have Hmm. poverty, globalization. Now they have added in हाँ जी. RBI also हाँ globalization. जी. हाँ So जी. some aspects of society. Okay. So those aspects are Hmm. there, and Hmm. poverty in your GS2. Then questions are asked in descriptive papers, Hmm. that Hmm. what are the programs of poverty reduction. Hmm. Hmm. Those Hmm. all is easy if you have gone through. Means you don't need any specific Hmm. Hmm. preparation Hmm. Hmm. for अच्छा. RBI Grade Hmm. B paper 2. Cool. So that was a very, I would say, holistic answer because you have covered phase one and phase two part. Thank you for that. But Manish, like these were the basic things.
लाइक Yes. अगर आपने वहां पे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आरबीआई में भी काम आएगा. टेल मी वन थिंग जो आपने यूपीएससी में सीखी होगी, लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडी एंड नॉन स्टडी एज वेल, और वो आपको आरबीआई में भी काम आई, जैसे डिसिप्लिन हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको यूपीएससी सिखा गई और वो आपने आरबीआई में इम्प्लीमेंट करी. Answer writing, sir. आंसर राइटिंग. डेफिनेटली. यूपीएससी जब पहली बार आप लिखते हैं किसी हाँ कोचिंग जी. इंस्टीट्यूट पे आंसर, तो यू हम्म. गेट अ मोड कि इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, हाँ जी. कंक्लूजन होना चाहिए, हम्म. क्वेश्चंस के हर एस्पेक्ट्स को आंसर करो, डोंट लीव. हम्म. ऐसा नहीं कि आपको एक पार्ट आता है तो उसमें 2 पेज भर दिए और फिर दूसरा को नहीं आता है तो कुछ डाली है. हाँ जी. हाँ जी. तो वो सबसे है. और वो हम्म. ऐसे राइटिंग में भी उसी तरह सर हाँ कि, जी. क्योंकि अब तो पहले था कि दो 200 वर्ड 300 वर्ड लिखना रहता था, तो हम्म. अब उतना प्रीवियस नहीं, लेकिन अब 600 वर्ड्स लिखना है, सिक्स हाँ जी. हंड्रेड टू 620. तो हम्म. वो फ्लो ऐसे में आना कि इंट्रो हो, और हम्म. फिर एक बॉडी टाइप का कि मैंने जो ऐसे लिखा था हम्म. यूपीएससी फॉर्मेट पे ही लिखा था. फॉर एग्जांपल आई गेव एन इंट्रो, देन आई हम्म. रोट दैट इन दिस सेशन आई विल डिस्कस दिस पॉइंट, ओके ओके ओके. and finally I will also conclude. हम्म. So, and that technique of connecting the paragraph, हम्म. of connectors like similarly, mostly, हम्म. second, those all help me. Means, so Cool. UPSC preparation is that answer, I think. So, so those who are preparing for UPSC, if they want to prepare for RBI, the descriptive writing is one of the most important thing, which will be common in UPSC as well as in RBI. Yes, The yes. only difference which I think is that, like in UPSC, we have to write in physical pen and paper format. Yes, that typing speed, you have to. There is no other Hmm. shortcut. You have to practice only. Yeah, You yeah, can take test series, or you yeah. can just write in one documents also. Hmm, And hmm, one hmm. more thing, that UPSC we write 250 words answer in हाँ जी. 15 marks question. Here you have to write in section 600 words. Cool. So sometimes for example, I am not able to write six. I am not able to type 600 words. I Hmm, was hmm. typing 480 to 500. So That. that Hmm. 480 to 500 will take time, because Hmm, if you hmm. will type for first time, you will hardly able to type 250 to 300 words. But Okay. those that much words you have to write in 10 marks question. So Hmm, you hmm, can't hmm. write the same length of answer in both 10 and Hmm, 15 hmm, marks. hmm. Cool. So typing practice has to be needed, even if you have Yes, some UPSC background. yes, So typing that practice was, will be. yes, that was a very valuable advice to all those who are planning to shift from UPSC to RBI. Yes, That brings me to the third question towards your UPSC, because see, Manish, there are multiple people, there are multiple different students who are like investing their time in UPSC, but they are not getting the desired results. So yes, they can also switch to RBI for some period of yes, time. yes. Now, definitely that switching has to happen. And when did in your mind आपको कब ये लगा कि मेरे को यूपीएससी से अब आरबीआई की तरफ जाना चाहिए? Like when Uh, did that shift happen? uh, After COVID. Okay. So due to COVID, the exam of every exam has got postponed. In UPSC Hmm. also, their PT prelims got extended to October. So Hmm. that time I was thinking about, and I have also left my job in 2018. So 2 year gap was also there. Yeah, yeah. So since my preparation of UPSC at some level was there, so I was thinking of also uh, giving another exams for some other jobs. And Hmm. in that, RBI fits perfectly. RBI. Yeah. So I would like to take that word perfectly. Some people Yes. think that RBI is a plan B, which I think is thoda sa incorrect, because if you are preparing for UPSC, some powers will be available to RBI Grade B officers as well. Although Yes. comparison is not good, but I Yes. think the best alternative for Yes. UPSC is RBI Grade B. It's the best alternative. It's not Yeah. plan B, because it's Yeah. not an easy exam to crack. Yeah, that is what I'm saying. Like Yes. many people, they think like RBI is a plan B kind of that, but Yes. it is the best alternative, and I hope you agree on that. Yes. It's the best. It's not an easy exam to crack. You can Yeah. see that in your PT results only, Yeah. because many times many good students who are good in writing Hmm. will not be able to crack the period, will not be able to cross the cutoff of quant Okay. Okay. or reasoning. Hmm. 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 This Hmm. year also you have seen many examples that their total marks
is above the overall cutoff, but they are Yeah, not crossing quant mark cutoff yeah. and all. So it's So not an easy exam. That I totally yes, agree with you. yes, Yes. Now, definitely that is enough of UPSC. And with all due respect to UPSC, I think yes, all the UPSC aspirants should think about RBI as well. Now, yes, when it comes to your engineering background, like yes. to all my viewers, Manish has done an BTech in engineering background only. Now, Manish, tell me, like, I want to break one taboo. Taboo means like something like an old thought. Many people think that RBI Grade B is a finance related job. Only finance or commerce related students can do it. How did your how did you break this taboo first of all, and how did you fought against all the odds, because you are coming from science and in RBI there is finance management. So how did you break this particular thought of chain? Sir, uh, firstly, if you feel like that it's a taboo and you are listening, सबसे सुनने को मिलता है कि हाँ. आपके लिए नहीं है, तो first thing is to do is to go and see the syllabus. Hmm. You see the syllabus and you see the finance syllabus. It's not any deep finance economic models there Hmm, 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 that hmm. is written in the syllabus. And same goes with leadership theories and all. And Yeah. they have also written the name of the theories which they normally Hmm. ask the question. So I don't think that the syllabus and the exam is designed like that, that you need to have a commerce background, means 3 years Okay. commerce graduate or 5 years, Hmm, because hmm, exams are not designed. This exam is not designed. This exam is for general. hmm, hmm, Yes, knowledge is needed of commerce, and but it's not basic, but you need basic, but slightly above. But it's hmm, not hmm, that you have to read any book, hmm, hmm, semester hmm, book of hmm. commerce graduate to learn economics Yeah. model and all. Cool. So that's a very good word of wisdom, that exam is of journal level only and anyone can Yes, apply it. yes, Certain, yes, advantage will be there for commerce students, yes, but that can be overpowered if you study well. Agreed? yes, yes, Cool. That brings me to my second question as well. Like you just told me, like you are working, like you were working somewhere, I would say, after your graduation. yes. Okay. So why did you left your job? First of all, that thing. I left my job that because I was not able to prepare, give the time which I Hmm. uh, how that required to clear the UPSC Okay. while doing my job. So I left my job. Is For example, I was preparing to give UPSC 2018. तो Hmm. जब जनवरी फरवरी आ गया, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रीलिम्स का पास अच्छा Hmm. नहीं आ रहा है, तो फिर देन यू थिंक दैट Hmm. since you have thought. And one more thing is that I took the decision at an early age, Okay. because I was conscious of that those things, that अगर ये नहीं हुआ तो हाँ हाँ. दूसरे में भी टाइम लगेगा, और फिर Hmm. अटेम्प्ट्स होते हैं, बिकॉज बहुत बार होता है कि आरबीआई ग्रेड बी में भी लोगों को इस एग्जाम के बारे में नॉर्मली लेट से भी पता चलता है, Hmm. नॉर्मली वो अवेयरनेस नहीं है जो वहाँ के सारे हाँ एग्जाम। हाँ. तो इसका 30 है, 30 Hmm. एज, 30 ईयर्स एज लिमिट Yes, है, तो आप maximum. ये तो आप 28 29 में शुरू किए, तो आप 2 अटेम्प्ट के बाद आपका एज एग्जॉस्ट हो जाता है. ये हो जाएगा। तो आई थिंक वो सब ध्यान में रखते हुए लिया गया था Hmm. कि मे बी अगर Cool. 1 2 बार में क्लियर नहीं हुआ तो लॉन्ग रन लगेगा, तो Hmm. So again, certain times we have to take the hard calls so that we can have a brighter future. यस, Right? Today you are being an RBI Grade B officer. That is a very good job as compared to a private sector job, right? यस, यस, Cool. So definitely we all have to take certain hard calls to make sure that we land ourselves in the RBI Grade B offices. Now, definitely Manish, let's come to the preparation part. Okay. ओके, First, tell me that how did you prepare for phase one, quant, reasoning, and English. Then I will go to general awareness. ओके। सर, फर्स्टली इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश is the most important subject if you want to cross the overall cutoff, Hmm. because normally its difficulties level does not differ too much year by year. Hmm. 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 And with right speed means 30 questions is there, 20 25 minutes are there, and if you right and if you attempt 30 and you score 25 24 marks, Hmm, then hmm, that hmm. will be a big boost to your clearing phase one overall cutoff. Okay.
because this year I think it was around 53 and you scored 24 25 in that Mm-hmm. only, so approx 50 marks. Yeah. Because I'm telling that because normally what happens is quant normal you do not have time to, फॉर मैंने 3 बार दिया, मैंने क्वांट में हमेशा 7 8 ही बना पाए हैं जितना टाइम Okay. लगता है। Mm-hmm. तो ये एक एडवांटेज होता है कि क्वांट में निगेटिव मार्किंग्स नहीं होने चाहिए अगर आप बना रहे Mm-hmm. हैं, मतलब आप गेस नहीं कर रहे हैं, आंसर आ रहा है तो क्वांट एक्यूरेट क्वांट होना चाहिए यानी। हाँ। हाँ तो जी। इंग्लिश के लिए सर वो स्पीड के लिए टेस्ट सीरीज, कोई भी हम्म। टेस्ट सीरीज मार्केट में इस टाइम अवेलेबल या है, या आप लोग का भी है। तो टेस्ट सीरीज से ही, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, ग्रामर हम्म। सुरामर उतना है नहीं, कॉम्प्रिहेंशन से लेना होता है, वर्ड अरेंज करना होता है, तो ऐसा हम्म। कुछ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड है नहीं जो आपको अलग कूल। से पढ़ना पड़े। कूल। कमिंग टू क्वांट, क्वांट हम्म। में सर जब आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज देते हैं तो हम्म। आपको आइडिया लगता है कि आप कहाँ स्टैंड है, तो बी ऑनेस्ट विथ योर से कि ये नहीं कि अगर आपसे नहीं बन रहा है, एक होता है कि टाइम हम्म। लिमिट में बनना, अगर आप टाइम देंगे आधा घंटा तो हो सके आप 20 में 20 बना लें, अगर आपसे टाइम हम्म। लिमिट में नहीं बन हाँ। रहा है तो आप बी ऑनेस्ट कि हाँ 5 या 6 बन रहा है, तो अगर आप 6 भी बनाते हैं और सही हम्म। बनाते हैं तो आपका इजिली हम्म। सही होना क्लियर चाहिए हो वो, जाता है। मतलब हाँ हंड्रेड लेकिन परसेंट एक्यूरेसी रखनी हाँ चाहिए। हाँ, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में मैंने हमेशा ही फेज 1 मेरा क्लियर हुआ है आरबीआई का। ओके। आई नेवर मेड मोर देन 8 9 क्वेश्चंस एंड दिस ईयर आल्सो आई गॉट 6 मार्क्स इन क्वांट। ओके। 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 सो हाँ दैट इज प्लेइंग सेफ, लाइक अगर आप जीए और इंग्लिश में अच्छा कर लेते हो और क्वांट और रीजनिंग में से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, दैट इज गुड आई थिंक। हाँ, अग्रीड। हम्म। तो हाँ एंड कमिंग फॉर रीजनिंग यू आर या। एंड जीए और वन मोर थिंग इन क्वांट सर कि आई थिंक most important thing in that exam is choosing your questions to invest time या। during the exam. Normally, whenever you come out from exams, last 3 years, 10, you see that every analysis will be there that एक डाटा इंटरप्रेशन इजी था और दो हम्म। तीन को ऐसा ही था। तो जो डाटा इंटरप्रेशन इजी है वो आपको चूज करना होता है, हो सके आप में पहला क्वेश्चन हो, किसी में लास्ट क्वेश्चन हो, तो हम्म। मे बी यू जस्ट स्किप थ्रू क्वेश्चन की कहाँ पे पैराग्राफ बना है, पहला क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्टली स्किप टू क्वेश्चन 5 एंड सी। तो क्योंकि अगर डाटा इंटरप्रेशन हो जाता है तो आपका 4 5 क्वेश्चन वहाँ हो जाता हाँ जी। है। एंड कुछ लोगों का जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग था क्वांटिटी, ओके। तो क्वाड्रेटिक। हाँ तो मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन खोजना शुरू करता था कि अगर है तो हाँ है। जी। तो उस तरह से आप अपना ये प्रेफरेंस टेबल बना लीजिए। लेकिन आई थिंक डाटा इंटरप्रेशन में एटलीस्ट एक बनाना बहुत ही, जो हम्म। हाई स्कोर भी करते हैं उनके लिए एटलीस्ट डाटा इंटरप्रेशन एटलीस्ट एक तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कोर करने के लिए एबव 10। हम्म। तो एक वो है, तो एक तो डाटा इंटरप्रेशन कोई चूज कीजिए, 2 3 होते हैं जो इजी रहे, हमेशा आप ट्रेड देखिएगा तो एक होता है जो डुएबल होता है, कूल। जो आप और दूसरा कि फिर आपका प्रेफरेंस हो, मेरा क्वाड्रेटिक था, फिर डबल सीरीज था, फिर मतलब यू हैव टू इंटेंस प्ले मेरा एज था। पर योर स्ट्रेंथ, जैसे आपकी हाँ क्वाड्रेटिक स्ट्रांग थी। अब रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में सर आई थिंक इसमें भी मेरा प्रेफरेंस था। प्रेफरेंस ओके। मीन्स वेन डायग्राम वाले हाँ। क्वेश्चंस मैं पहले स्लॉगिज्म। रिसर्च करता था, तो सेल्स हाँ। तो उसमें क्या है कि मेरा स्पीड भी था, तो वो ओके। क्वेश्चंस अगर 5 भी है 10 भी है, मैं बहुत ही तेज बनते थे उसमें। आप मैं पजल्स बनाते थे? हाँ पजल्स बनाते थे, तो ओके। पजल्स पजल्स भी मैं, उसमें भी पजल्स में मेरे प्रेफरेंस है। ओके, मतलब हाँ, प्रेफरेंस जो इन वो द दो सेंस, वेरिएबल वाला होता है, वो तीन हाँ वेरिएबल वाला। हाँ, प्रेफरेंस इन ओके। द सेंस कि आई वुड लाइक द पजल्स जिसमें मंथ मंथ हम्म। के रूप में कि आप इस मंथ में कोई हाँ हाँ। 2 तारीख है तो इसमें वो वहां या गया या या। पढ़ाने के लिए, वो तो उस तरह जो आप वर्टिकली अरेंज कर सकें, हम्म। या सो फिर बेसिकली, फ्लोर्स। हाँ, बेसिकली व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम योर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इज दैट यू हैव टू प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ। जो आपको अच्छा यस। लगता है वो पहले आपको फाइंड करना है पूरे पेपर में, उसे हाँ 100% पहले करके सॉल्व करके रखना है, राइट? हाँ हाँ एंड दैट आई थिंक इज कॉमन फॉर रीजनिंग एंड क्वांट्स। हाँ इंग्लिश में आपको थोड़ा हाई स्कोर कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश हाँ। आई थिंक इंग्लिश में आपको हाई स्कोर करना है, क्योंकि क्वांट में कभी कभी ये भी होता वो है ना भी कि आप पढ़ हाँ। के भी जाते हैं तो हाँ, आप क्वेश्चन बहुत टफ क्वांट आता है। में आप फंस भी जाते हैं, आप कोई हाँ। डीआई उठाएं,
और सिर्फ टाइम, हम्म। मेनली टाइम लिमिट के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है वहाँ या पे। बहुत. So that is again a good word of wisdom that you have to play as per your strength. Now coming to the fatty asset of journal awareness, because journal यस awareness is very wide, बहुत बड़ा है. यस 80 यस मार्क्स का भी आता है फेज वन में. तो यस। सबसे पहले तो जस्ट अ स्मॉल एडवाइस कि कितने महीने का जर्नल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए आरबीआई के लिए. जस्ट अ स्मॉल एडवाइस. गो अप टू 6 मंथ। ओके. स्मॉल एडवाइस, देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, और आप कर पा रहे हैं तो आप 1 साल चलिए, लेकिन मिनिमम 6 मंथ। ओके. एंड गो बाय हार्ट, मीन्स आपको याद होना चाहिए छोटा छोटा सा डिटेल्स भी। आप कोई भी मैगजीन उठाते हैं उसके ओके. अनुसार एटलीस्ट 3 to 4 मंथ। क्या आपने नोट्स भी बनाए थे? नहीं सर, तो आप. जनरल अवेयरनेस का नोट्स नहीं बनाते थे, क्योंकि ओके. ऑलरेडी आप लोग का पीडीएफ होता था जो ऑलरेडी हम्म. कंपैक्ट होता है, उसमें आप फिर नोट्स बनाने चलेंगे तो आप टाइम वेस्ट होता है. पॉइंट्स पॉइंट्स टाइम वेस्ट होता है, पॉइंट्स भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि हाँ आजकल जी. जो जनरल अवेयरनेस वन वर्ड नहीं पूछ रहे हैं, वो हम्म. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। या. तो वो, और मेनली जनरल अवेयर्स के हम्म. नोट्स में टाइम। कूल कूल कूल. ठीक है, तो मतलब जो मैं पूरा कंक्लूड कर पाया हूँ कि यू वर लाइक वेरी गुड आई वुड से इन फेज वन. Phase one यस was not a big tuffle for you because you have यस। described phase one in a best manner, and that I can see as a confidence on your face as well. Like ओके। when you are explaining things, you are very much calm and I would say confident. Now let's come to the phase two part. Now before I come to phase two, journal questions. Like phase two यस is very big. So what यस। does what were the motivating factor for you जो आपको प्रिपरेशन में रन करते थे? One thing is that uh, whenever you see your name in the result of phase one, हम्म. already the list is of, you are already feel sometimes कि you are lucky, हाँ. एक 1500-1600 लोगों में आप ऑलरेडी है। हाँ तो जी. आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स यू सब इनकरेजमेंट कि एटलीस्ट इतने लोग एग्जाम दिए थे, आप हम्म. 1500 में है, आप नाउ आगे भी आप जा सकते हैं। हाँ जी. तो एक वो था। एंड जब आपका फेज वन क्लियर हुआ, देन अगेन यू वुड हैव थॉट कि यार अब बस फेज टू क्लियर करना है फिर इंटरव्यू. राइट. या फेज वन और फेज टू में टाइम बहुत कम होता है, तो यस. ये सोचना कि इंटरव्यू कैसे हो? का अच्छा. क्या होगा क्या नहीं होगा, हम्म. तो वो बहुत ही है, क्योंकि टाइम 20, इस बार ट्वेंटी हम्म. ट्वेंटी वन ही डेज था। या. रिजल्ट के बाद और वो कम हो जाएगा, 12 to 13 हाँ जी. डेज। तो कूल. हार्डली एंड आपके पास टाइम होता है कुछ और सोचने का। and you also talk like when your like final result was out, you directly call your mom and dad. So are you too यस much connected to them? यस Cool. So you are like यस। good boy because that is rare. That is very rare to see in Kalyug kind of that. Now, if I ask you one hypothetical question, like you have to choose between one, like you have to choose only one between your mom and dad. So what will be your answer? सर इट्स हार्ड, आई कांट चूज Yeah. So that okay, that is really good विथ। because that was the only answer which I was expecting from your end, and you are very smart as well. You have just given that this answer is ओके not there. Cool. Now let's come to phase two. First ओके। of all, tell me what is your favorite subject in phase two? I think the favorite is management. Management. Yes. Nice. Oh, Cool. see, the reason is Now, for that is, just a minute. I was totally surprised to listen to that because an engineering student saying that management is favorite, that is really very rare to see. So let's okay. now please continue and tell me the reason. Like why management? Reason is syllabus are fixed. Yeah. You don't have to do too much googling or read about too much books, too much coaching issues what they are writing, Mm-hmm. because they are written with manage. I like the management syllabus of RBI. Leadership theory, that 5 theories they have mentioned. Motivation they have mentioned, Mm-hmm. ERG and Adelphi and all. Maslow, yes. So yes, so keeping that syllabus at base, what in any exam, what really works for me in phase one PA also, and this also in the revision. So Revision. since my syllabus is fixed, and I do not have you do not have to counterbalance the content with current affairs while Mm-hmm. writing your descriptive answers also. Mm-hmm. So that helps me to revise that, Okay. especially this phase one, phase two. I think management I have revised many times. Many times यानी शुरू कितना 10 बार? 10-12 बार तो मिनिमम ही होगा, क्योंकि 10-12 होता बार है। मिनिमम. हाँ, क्योंकि होता क्या हाँ. था कि
कम्युनिकेशन के 2 या 3 पेज के ही नोट्स हैं। ओके। तो आप सोने के बाद कम्युनिकेशन, सोने के पहले कम्युनिकेशन एक हम्म। बार देख लिए, उठ के देख लिए मोटिवेशन। तो हम्म। तो मोटिवेशंस में आपके, और मोटिवेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम्म मैंने कभी कभी लिखने का, कुछ हल्का नोट सुनाने का भी प्रैक्टिस किया था, हम्म। क्योंकि लिख और उस मतलब लिख के याद करने का प्रैक्टिस उस तरह का। तो और एक जैसे वो आपने, है। यस यस, ये रिवीजन, आप मेरे को रिवीजन पे थोड़ा और आपको पूछना होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है। लाइक आप रिवाइज कैसे करते थे? लाइक आपके नोट्स थे खुद के? आ, दो सर, एक आपका प्रैक्टिस रिवीजन कैप्सूल था मैनेजमेंट या का। आई थिंक बहुत पहले मैंने जब यूपीएससी का तैयारी कर रहा था हम्म। तब आपका एक कोर्स लिए थे, ओके तब ओके था। ओके। तो वो अब तक मेरे पे सेव था। कूल कूल। तो वो लैपटॉप पे सेव था। तो हम्म। वो, और एक दो इस बार ये लोग नए सिलेबस ऐड हुए थे, मोटिवेशन, मोरल। या। And one more thing that in that also I missed that since the RBI changed the syllabus and they have हम्म। ethics, they have या brought एथिक्स, ethics. दैट That यू वुड हैव also, कवर्ड इन यूपीएससी। yeah. So I have not read the ethics in RBI in this year. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द बिगर डोमेन Yes, इन यूपीएससी। yes, and I have written a good answer of this year of difference between code of conduct and code of. या, दैट वाज अ So डिस्क्रिप्टिव। yes, हाँ, so so cool. uh, So what again I can conclude is that you are very smart. Like you know that you have studied ethics in UPSC, so that you do not wasted your time in studying ethics in RBI. yes, So that is ethics how you RBI. play smart. Yes, Yeah. ethics RBI and leadership theory and all. I think it is that this objective sections of management is also very useful. Okay. For Huh. yes, program-based questions are there, but if Mm-hmm. you have not memorized also, but the general idea of, I Okay. think in one program was there of communication that Mm-hmm. which all science are there, different type of science this year, Mm-hmm. and leadership theory. So you have a Mm-hmm. general idea of different theory that you can answer those questions. They are not asking you any long answers, Technical related options. technical related. Cool. They also only they are Mm-hmm. asking, and you have general idea. You have read Mm-hmm. one two word of any Mm-hmm. documents about those theory, then you can. Okay. And so that general idea should click in exam. Mm-hmm. For that revision is necessary, especially in Nice. management. Yes, nice, nice, nice. And also, like while doing revision, there are certain, I would say, issues like boredom. Some Yes. people also get bored. तो वो आप कैसे tackle करते थे? Uh, Revision should not be a 1 hour or 2 hour long exercise. Revision Okay. should be, I used to do revision topic wise. कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, तो फिर Hmm. कुछ और पढ़ना है पढ़ो। मैं लीडरशिप छोड़ी, Hmm. एक Hmm. पूरा Hmm. हो गया तो हो गया। तो इट्स नॉट लाइक बोर्डम से बैठने के लिए आप मैनेजमेंट को रिवाइज करना है तो 2 घंटा एक लाइन से शुरू हो गया, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, हाँ. मोटिवेशन। So that will board them come. So for And example, in one hmm. day, morning I took I have done division of communication. Afternoon leadership, evening motivation, and like that I used Cool, to do cool. division. And like, what was the source of entertainment? Like you are starting from very back, like 2017. Your graduation happened in Yes, 2017, right? yes, yes, Today's 2023. yes, So almost more than, I would say, more and less than 5 years only. yes. Now, what was the source of entertainment in your life? Like, how did you charge yourself? What was your own Uh, ideology? uh, so in that, sir, I'm not a big believer of those things that फेसबुक पर देखो, यूट्यूब पर देखो, वो सब। तो Mm-hmm. आई यूज टू वॉच मूवी और इंटरनेट Mm-hmm. ओनली थ्रू देयर वेरियस स्ट्रीमिंग साइट, Mm-hmm. and go on YouTube also, go on Twitter Mm. also. So those all things I used to do, and Cool. also it's not like that I used to close myself in my home. I used to also go to my village and all whenever got an opportunity. So you believe that entertainment is important while you are studying, Yes, right? Now yes. tell me, like, which was your favorite movie first of all? Like, what is the recent movie? Chalo, favorite movies will be a very big answer to give, but when it comes to, I would say, what is your recently watched movie? Recently.
I have was just 2 3 days back only. Okay. Equalizer 3. No, no. I would say in your preparation time, which movie you watched Okay. for a stress buster? Okay. That Tom Cruise Mission Impossible. There is opening part one. Nice, nice, nice. So Tom Cruise again would have motivated you to take certain stunt risk like that type of stuff. Okay. And you also mentioned regarding your village, Yes. like take me through your like how did you get motivated through village, and what was the positive effect of village on your studies? One thing about the village is that you do not have too much noise there. Means Yeah. शहर में आपके पास जहाँ पढ़ते हैं तो 3 4 दोस्त भी होते हैं तो Mm-hmm. यू नो कि हुआ कि नहीं 2 3 एग्जाम्स Mm-hmm. दे रहे हो तो समटाइम्स यू फील डिप्रेस्ड यार Mm-hmm. 2 3 साल हो गया है कहीं यहाँ कभी Mm-hmm. इंटरव्यू नहीं होता है कभी ये नहीं Mm-hmm. सो विलेज इज दैट प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी Mm-hmm. अकेले outside noise is not there so that sometimes helps you in self introspection कि कि अगर नहीं हो रहा है कहीं जगह तो कुछ गलतियां तो हो रही होगी प्रिपरेशन में फॉर Mm-hmm. एग्जाम्पल मैंने कहा कि RBI ग्रेड बी नॉट इजी टू क्लियर तो Mm-hmm. वो मेरा इसलिए था कि मैं दोनों को लेके चल रहा था पिछले साल का ही एग्जाम्पल है कि Okay. मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू था उसके जस्ट 3 4 दिन बाद बेस था तो Mm-hmm. ग्रेड बी का बेस तो मैंने उतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया था तो वो लेकिन एक अंदर से ही था कि 2 पेपर में स्कोर करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट देख लिया Mm-hmm. जाए बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर तो फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर की यूपीएससी Mm-hmm. में कहीं कुछ ऑप्शनल में या फिर कहीं जीएस पेपर्स में बात नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेके कि लगातार 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेंस में और Mm-hmm. मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तभी आप इंटरव्यू जाने के बाद भी फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इस Mm-hmm. साल तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर के कारण ही इस साल मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं दिया था So basically, you are saying that the village allows you to introspect your own soul, यस and कि because गलतियां cities, please, हाँ please continue. गलतियां कहाँ हो रही है मतलब ऐसा नहीं है सिटीज में नहीं हो सकता है लोग Ha ha कर ha सकते हैं बट इट्स जस्ट माई पर्सनल क्योंकि सिटीज में ha नॉइज ha. बहुत होता है And कि आप natural things is missing in cities these days, right? हाँ We have वो भी more है nature in villages. Villages are more greener than compared to the cities. यस यस Yes. So, which village you are like? Can you tell me the name of your village, like very proudly? या सर इस नेम इज धीरा इट्स ए Dihira. नालंदा डिस्ट्रिक्ट Cool. So you are basically from Bihar. यस Cool, cool, cool. That is really very good advice, and I would say unique advice from your interview. And to all the rural aspirants who are coming from rural India, this is the best advantage which you have. And today, online education is available with the help of यस internet. यस So you do not need to come to cities. You can just study यस from your beautiful villages, houses, and that is एंड stress free also. and it's also a less cheap also online education. Yeah, You have to and sometimes if you move to some city, you take time to adjust. yeah, yeah, yeah. For That is true. example, not you go for example, a boy from a village in Bihar will go to Hmm. Patna. He may not take time to adjust, but if you Yeah. go to Delhi और Hmm. कोटा फॉर एग्जाम्पल मेरी गो Yeah. टू कोटा तो Haha. दे 5 6 महीना तो आपको एडजस्ट में लग जाता है Yeah, कि because of food, because of weather, because of हाँ anything else. नए In लोग फिर uh, से तो आपका पता चला कि 1 साल बाद एग्जाम है उसमें 6 महीना तो आप एडजस्ट करते ही निकल दिए yes, yes, yes. So that's really very good to see that you took your villages for positive side. That is again hats off to you. Now, when it comes to, I would say, like again, coming to preparation, because preparation has to be done at all cost. How did you practice descriptive? Like हाँ typing speed, वो सब matters पे please. हाँ सर डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग स्पीड सर to in English you have also to focus on your grammatical errors. So Mm-hmm. there are test series you join, okay, but sometimes there are only 2 3 test series and you are about to write. Mm-hmm. So what you do is you write one essay previous Mm-hmm. year and copy use AI, Google Bard, Google AI or your Quora in Quora also, Core, and yes. Grammarly.com and all. You Yeah. can do your
ऑनलाइन ग्रामर चेक, दे विल हम्म टेल यू कि क्या मिसिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे में, मैंने पहली बार जब चेक किया था तो इंग्लिश में, तो दे वर लाइक यू आर मिसिंग प्रोनाउंस, हम्म राइटिंग बिफोर नाउंस, ए एंड दा। तो वो हम्म बहुत ज्यादा मिस हो रहा है। तो अब 2-3 बार कोई भी उसका लिखेगा ना, तो अब नॉट लिख सारे मिस्टेक एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन हम्म जो कॉमन मिस्टेक है, जो आपको हम्म पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप 100 बार 100 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन उसमें 10-12 बार वो हो गया। जैसे मेरा हम्म, नाउन या प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के आगे ना लिखना, वो बहुत बार मिस हो जाता है। तो ओके। अगर आप ग्रामरली में वो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 50-60 एरर बता रहा है। आप और 200 वर्ड से लिखे हैं, लेकिन उतना एरर। तो फिर हाँ आप जो कॉमन एरर ही मिनिमाइज कर देते हैं ग्रामरली के थ्रू या ग्रामर्स में, तभी हाँ हाँ। आपका ये नंबर ऑफ एरर्स काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि आई यस यस थिंक यस। कि जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वही रिपीट होते चले जाते हैं। एक लेवल के बाद जब आप इंग्लिश राइटिंग वाइटिंग स्किल्स आपका हो जाता है, तो एक कॉमन मिस्टेक्स ही होते हैं जो नॉर्मली लिखते समय हम लोग उतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब कूल। पेपर में चेक करना होता है तो एक वो हो गया। और दूसरा सर टाइपिंग स्पीड के लिए, सर वो सेल्फ पे है। मतलब हम्म एग्जाम्स में भी आप अगर कोई टेस्ट सीरीज भी ले, तो वो आप ही पे है कि आप उस टाइप फ्रेम में कर रहे हैं। तो हम्म। आई थिंक द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टाइपिंग, क्योंकि आजकल ना फेज 1 और फेज 2 के बीच टाइम बहुत कम होते बहुत चले कम है, जा रहा है। बहुत कम है, हाँ। तो आई विल नॉट से कि अगर आपका हम्म टाइपिंग में प्रैक्टिस नहीं है, तो आई विल नॉट से कि दो 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 दिन का दो जो 20 दिन का गैप है उसी में हम्म। टाइप करना शुरू करो। कूल। सब टाइपिंग यू शुड हैव स्टार्टेड बिफोर योर फेज 1 ओनली। हल्का आइडिया हो जाए कि आप कितना लिख पा रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, कि आप कूल। 200 to 250 वर्ड। यस तो यस उसके लिए यस। आप जरूरी नहीं कोई टेस्ट सीरीज लिए, आप हम्म पेपर रखिए, इंग्लिश पेपर देख के टाइप कीजिए, वर्ड हाँ जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल के। मतलब आपको तो टाइपिंग सीखनी है, एज सिंपल एज दैट। टाइपिंग टाइपिंग मिली स्पीड, टाइपिंग विद स्पीड। टाइपिंग भी स्पीड, टाइपिंग तो हो ही जाएगा, हाँ लेकिन जो हाँ। स्पीड वो एग्जाम के समय चाहिए होती है। एग्जाम्स आपको चाहता है जिस स्पीड से राइट करना, हम्म। उसके लिए आपका स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस नाइस। एंड नाउ लेट्स कम टू स्कीम्स, करंट अफेयर, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। वो भी यस। बहुत बड़ा सिर दर्द है, लाइक इन सबको कवर करना। तो हाउ डिड यू कवर दैट, लाइक जस्ट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। फर्स्टली रिपोर्ट एंड इंडिसेस, आई टोल्ड यू ऑल, मैंने पहले बताया कि करंट अफेयर 6 महीने तक, हम्म। लेकिन उसमें फिर कुछ ये है फुट नोट्स है, जैसे कि हाँ रिपोर्ट एंड जी। इंडिसेस 1 साल तक चला जाएगा। ओके, तो रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर। स्पेशली जो जो साल में एक ही बार आते हैं, ओके। आईआईएफ के रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, सोशल हम्म। सोशल इकोनॉमिक्स एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये जब एक ही बार आ हम्म रहे हैं, तो आपके एग्जाम में 6 महीने में नहीं भी है। इस बार हम्म। एक रिपोर्ट से रिलेटेड यूएनडीपी का क्वेश्चन हाँ। नेक्स्ट स्टेप में पूछ दिया था, वो साल में एक बार ही आते हैं, लेकिन पिछले हम्म। 6 महीने में नहीं। तो आप रिपोर्ट्स को भी रिवाइज करते थे जैसे मैनेजमेंट को करते थे। रिपोर्ट्स, यस सर, रिपोर्ट्स को, लेकिन वंस अगेन रिपोर्ट्स में ना हम्म मैंने कभी उस तरह से रिवाइज नहीं किया। जैसे वो जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन था हम्म लिखना, वो काफी डिटेल्स पे मोमेंट्स रिलेटेड था। हम्म। तो मैंने उतना कभी डिटेल्स पे रिपोर्ट नहीं पढ़ा। हम्म मैं कुछ ही रिपोर्ट्स, वहां पे भी आपको चॉइस करना होता है। जैसे मैंने कुछ रिपोर्ट्स काफी डिटेल्स में पढ़े थे, आरबीआई के रिपोर्ट, जैसे हाँ जी। रिपोर्ट और करेंसी एंड फाइनेंस, हाँ तो वो जी। आपको आंसर्स में आए, तो वहां पे आपको चॉइस लेना पड़ता है कि कुछ रिपोर्ट्स आप डिटेल में पढ़िए। तो मेरा था कि जो आरबीआई का है, आईएमएफ का है, ये सब का रिपोर्ट डिटेल्स में पढ़े कि क्या हम्म। कह रहा है, 3-4 पॉइंट जो आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे ऐड कर सकते हैं। यस तो यस। वो, और बाकी सब आप उसी तरह पढ़िए जिस तरह से फेज 1 पढ़ना है, या। कि कोई अगर उसमें इम्पोर्टेंट डाटा है तो वो याद रहे, और कौन रिलीज कर रहा है वो याद रहे। एंड व्हाट अबाउट स्कीम्स, स्कीम्स कैसे करी आपने। स्कीम सर, वंस अगेन यूपीएससी प्रिपरेशन हैज हेल्प हाँ मी हाँ। अ लॉट, क्योंकि हाँ जी। मुझे कभी भी जाके ये सोचना नहीं पड़ा। सिर्फ अब 2-3 साल या 3 ईयर 4 ईयर का प्रिपरेशन हो गया हम्म। इस साल मिला के। तो इन बिल्ड जितने भी स्किप्स हैं, वो
इनबिल्ट हो गया था कि बेसिक्स की मिनिस्ट्री कौन सा है, मनरेगा का मिनिस्ट्री कौन हम्म सा है, ये कौन सा है, वो लेकिन फिर आप आरबीआई में आते हैं तो आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में उसमें भी इकोनॉमिक्स एंड सोशल में हम्म जाइएगा तो कुछ मिनिस्ट्री के स्कीम्स आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं। ओके जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के स्कीम हम्म डिटेल में पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, क्योंकि मिनिस्ट्री आप ऑफ उन लोग, फाइनेंस हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गोल्ड हम्म मोनेटाइजेशन, ये सब स्कीम जो हम्म डिटेल्स में, वो आपको फेज वन में भी हेल्प करेगा, और क्योंकि मिनिस्ट्री आजकल ऑफ हेल्थ भी होना चाहिए एक आप सोशल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कूल सो मतलब जो और सिलेबस से रिलेटेड है सारी मिनिस्ट्रीज हाँ इंपॉर्टेंट होगी। अब क्या कोई हाँ, बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी पढ़ेगा इतना डिटेल में? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस डिफेंस डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन होता क्या है कि फेज वन में या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई हम्म न्यूज में रहे तो तो वो आ पूछ दिया सकता है। जाए। ठीक है। हाँ, तो इतना तो अगर वो इतना ज्यादा न्यूज में है तो उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हाँ रहे कि अगर नाम लिखा हुआ है तो आपको ये रहे हाँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है मतलब तो वो जो सर, कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाँ एजुकेशन ऑल्सो, सर, हाँ तो वो आपको सोशल, डिटेल्स में करना है। सोशल, जो सोशल इशू रिलेटेड हम्म। मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री है, फाइनेंस हम्म रिलेटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, हाँ तो हाँ ये हाँ सब आपको डिटेल्स में पढ़ते हैं। कूल ठीक है। और और उसके हम्म लिए भी आई थिंक नोट्स ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी सोर्स यूज करते हैं, उन हम्म लोग देते हैं, लेकिन फिर उन लोग सोर्स पे क्या होता है कि सारे मिनिस्ट्री के डिटेल्स पे रहेंगे, लेकिन आई थिंक कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अलग से कूल उसको ये करें। कूल नाउ लेट्स कम टू इंटरव्यू। ठीक है। यस सर। तो पहले तो मुझे ये बताओ आप जैसे आपका फेज वन क्लियर हुआ और फेज टू क्लियर हुआ, ओ यस, ज्यादा खुशी किस में हुई, फेज वन में या फेज टू में? हाँ फेज टू में। फेज टू में बिकॉज अब आप यस, इंटरव्यू दे रहे हो एंड दिस वाज योर ये फर्स्ट इंटरव्यू राइट इन आरबीआई? दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू इन आरबीआई। So in the three attempts, this was your first interview in यस RBI. Cool. यस। Now, how did you prepare? First of all, tell me that in interviews domain. ओके, सो इन इंटरव्यू आई हैव एन इनर सेल्फ ऑफ सेल्फ बिलीफ कि अच्छा ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि नर्वस नहीं होना है, वो नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूपीएससी में दिया हुआ था, और यू नो विद समटाइम जो हम्म पास सक्सेस पे आप लीड करते हैं, तो मैं आई वाज लाइक कि भले ओवरऑल नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मेरे अच्छे नंबर आए थे यूपीएससी Cool. फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में। तो So one thing which is common in your phase one, phase two, and interview, like ये, यूपीएससी प्रिपरेशन यू हैव सेड लाइक इज कॉमन टू फेज वन, वहां पे आपको क्वांट रीजनिंग में हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ सी सैट। फेज टू में अगेन स्कीम्स एंड इकोनॉमिक्स एंड आंसर राइटिंग, एंड इन ये, फेज थ्री एज दैट इज इंटरव्यू में भी आपने यूपीएससी का दे रखा था तो आपको यहाँ पे भी हेल्प मिला। हाँ, तो उसमें ये था ना कि यूपीएससी में जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए थे, तो आप कुछ चीज बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे हम्म सेल्फ के बारे में, अपने गांव के बारे में, या अपने सर्विस से होते हो तो उनका बायोडाटा और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देते हैं स्कूल्स के बारे में, तो वो सब सारे में प्रिपेयर थे और ऑलरेडी गूगल ड्राइव में सेव थे। तो ओके वहाँ पे मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा हम्म कि अपने पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। हम्म मैंने यहाँ पे क्या किया कि लोग टेलीग्राम पे लोगों से एक दो मेंटर से पूछे, और उन्होंने बोला कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हिंदू और हम्म इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने फाइनेंस, सबने फाइनेंस एक्सप्रेस और ये सब हम्म बिजनेस लाइन। तो मैंने इंटरव्यू के लिए अलग से ये बिजनेस लाइन पढ़ना शुरू किया था, या फाइनेंस एक्सप्रेस के हम्म और फाइनेंस एक्सप्रेस के वो एडिटोरियल। तो मैंने हम्म वो, मेरा इंटरव्यू 4 अक्टूबर से था, तो मैंने पूरा सितंबर का पढ़ा था, और 3 अक्टूबर तक का, कि वो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम्म उसके और लिए। did you subscribe to any mock interviews of EduTap as well? या सर, आपका मॉक इंटरव्यू था, तो वो हम्म मॉक इंटरव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि RBI Grade B interview is different from maybe back PO interview or UPSC civil services. That basic difference in interview is there, because what UPSC or back PO interview would be asking, and what their expectations of हम्म you of skills will be different from what maybe RBI हम्म Grade B will judge on. So I think
for that mock interview is important More. because आप यूपीएससी लाइन से आ रहे हैं तो आप Mm-hmm. सारा इंटरव्यू पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल से नहीं, लेकिन यहाँ तो फाइनेंस और ये हो रहा है, Cool. फाइनेंस रिलेटेड चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर्स यू फॉर दैट, यू नो कि एक दो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो मैंने जब EduTap का मॉक इंटरव्यू अटेंड किया तो मुझे कहा गया था कि ठीक है कि तुमने मॉनेटरी पॉलिसी ये सब पूरा पढ़ लिया है जो Mm-hmm. सब पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ तुम टेक्निकल से और बिट से हो और अच्छे कॉलेज से हो, तो जो टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है एआई Mm-hmm. में जो आरबीआई कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब के बारे में तुम ज्यादा पढ़ो। तो अच्छा. एज समथिंग, क्योंकि तुम इंजीनियर हो और कॉलेज भी तुम्हारा बिट्स है, तो उन्होंने बोला था कि वो जो टेक्निकल एआई हो गया, मशीन लर्निंग, फिर या फिर तुम कैसे यूज कर सकते हो उसको। Mm-hmm. तो एज समथिंग लाइक दैट वाज आस्क्ड आल्सो इन दियर इंटरव्यू आल्सो Cool. ऑन लाइन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। Mm-hmm. तो So that वो was like you have covered everything regarding interview as well. Now on the D day, जब ये interview हुआ, what ये were the like three? Can you recall any three questions just on the based on your experience? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वन, tell me about Taxila University. I was from Nalanda, Okay. so Nalanda University, Taxila University. Mm-hmm. So I told them that they asked, they want to, the chairman sir asked Mm-hmm. that what to, and they bombarded me. Then he was with history questions since you are from UPSC. Then one question they asked that one more thing that on that day also be attentive to things. For example, that day there was a news of Nobel Prize being given in physics for studying electrons in some nanosecond. Mm-hmm. So they asked me that, do you know that? My answer was that this was only, sir, I have just seen the front page of Telegraph. In there, in one box, it was written that Mm-hmm. Nobel Prize for physics goes Six. for studying electrons and neutrons. Mm-hmm. Nothing else I know about the scientist name Okay. and all. So they were Okay. okay with that. Okay. So that's good that you handled the situation very well. Now, let's try to conclude our overall conversation. I think the best thing which you have said is regarding your villages. That Okay. was one of the most highlight thing. Second, I think the UPSC journey thing. Yeah. That knowledge never goes into waste. Whatever you have studied in UPSC, that was here in RB as well. Yeah. Now I need like two journal tips for those students who are starting their journey now for RBI 2024, for RBI 2025 and onwards. So Oh, two just journal tips regarding your, I would say, based on your preparation. yeah. Firstly, current affairs, start reading for now only, बस एग्जाम भले ही 6 12 8 9 महीना बाद हो, लेकिन स्टार्ट, Mhm, क्योंकि होता ये है कि आप एकाएक नोटिफिकेशन के बाद उठाते हैं तो आपके पास mhm, टाइम नहीं रहता है। तो करेंट mhm, अफेयर्स में भी नॉट रीड दैट मच, बट अभी mhm, से पढ़ने से क्या होगा, जो मैंने बोला कि आपको स्किम्स के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हो mhm, सके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का स्कीम्स आपको डीप में पढ़ना है, लेकिन आप जब mhm, एग्जाम के समय में वो स्कीम न्यूज में ना हो, लेकिन वो स्कीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि mhm. आपके सिलेबस में है। Okay. तो फर्स्टली कि स्टार्ट करेंट अफेयर्स लाइटली ओनली, नॉट टू मच टेंशन कि क्या आप 100 Mhm. पेज या 120 पेज का बुकलेट है। सो फॉर दैट, सेकेंड, one mistake which in Mhm. RBI Grade B people do is leave that preparation of phase one till too Mm. late. Okay. Phase, for example, I feel that sometimes होता क्या है, आई थिंक नॉट स्पेशली ये उनके लिए है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और जो Mhm. यूपीएससी से है। उनको होता क्या है ना कि आपको लगता है कि यार क्वांट और ये तो हो ही जाएगा, 2 या 3 या 4 नंबर ही तो स्कोर करना है। Mhm. लेकिन मैंने देखा है लोगों को जो Mm. सी सेट क्लियर किए हैं,
उससे नहीं हो पाता है, 2 या 3 नंबर भी क्वाड में नहीं आ नहीं आ पाता है। पाते। हाँ, तो लगता आसान है, तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन नॉट ओवर कॉन्फिडेंस कि अगर लाना मुश्किल है, क्योंकि अगर अगर सेक्शनल कट ऑफ 2 या 3 ही नंबर है, मतलब लाना सही में मुश्किल होगा। तो एक वो है कि क्वाड गिव टाइम। proper not time, I think time respect, I think, to quant and reasoning. I think people take too lightly कि it's not that कि उनको आता नहीं कि 20 क्वेश्चन में 2-3 तो बन ही जाएंगे। वो आई थिंक वो जनरल फीलिंग होता है कि 2-3 बन ही जाएंगे वो। कूल। So these are एंड your two tips, or do you थर्ड want to continue over here? थर्ड इज फॉर phase 2. Hmm. I told that management. I think the paper 3 is, I haven't got my marks, but I am expecting good marks in my paper 3. Paper 3 of So finance and management, right? finance and management. So I think in that management you can prepare before phase. And you will surely get good marks because you have revised management 10 to 12 times. You already said Yes, that. yes. So And definitely. management is only thing because you will not be shocked by paper. Okay. कभी कभी होता है कि आप 10 स्कीम 12 स्कीम पढ़ के गए हो, लेकिन वो ऐसा स्कीम पूछा है जो यूज Hmm. में ना हो, तो आपको लगेगा क्या ही पूछ दिया है। लेकिन Hmm. अगर आप मैनेजमेंट का पेपर देखा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, तो वही पैराग्राफ पे इधर उधर करके, Hmm. तो मैनेजमेंट पेपर विल नॉट शॉक यू। तो Hmm. उसमें आपको ज्यादा स्कोर करना, किसी एक पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर करना कि कहीं पे कुछ Hmm. एवरेज मार्क्स भी आए तो आप क्लियर कर सके उस हर्डल को। Cool. So these were the three tips given by Manish. And yes, Manish, like talking to you, definitely it feels like a great pleasure. First of all, because all the UPSC aspirants who are feeling dejected in their life, I would say take example of Manish. Try to pick up yourself because all the knowledge which you have gained in UPSC, it can be used in RBI also. यस, Okay, Manish, that I ओके, totally think you will agree on. And the यस, second thing, try to do introspection as Manish यस, did in his own villages. Try to do introspection. That is again very important. यस। Okay. Anything else, Manish, which you want to add before we conclude our interview? नथिंग। Cool. So that was it, Manish. It was really very nice to meet you. ओके And सर। from the entire team of EduTap, from all the management of EduTap, big congratulations for you for clearing RBI Grade B, and we wish you all the very best for your future on the viewers. थैंक यू सर। Thank you for taking out time. Thank you for coming in this class. Thank you for coming. Thank you for sharing all the inputs rather. We थैंक यू, definitely are obliged for your time. Thank you so much. And थैंक यू। yes, I hope all the viewers also would have taken advantage from all the tips and advices which you have shared. ओके सर। Cool. So let's end it right now. So Manish, कैसा था? सर इट वाज फाइन, नाइस सर। मजा आया? यस सर। सो जो आपने फोटोज है वो मैं लगा दूंगा, मतलब मैं अपनी ओके, टेक टीम को बता दूंगा। एंड टोटली योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। आपने बहुत सारी चीजों पे बोला, कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझे बता दो, मैं उसको ऐड करवा देता हूँ। नो सर, आई थिंक द जनरल विच आई वांटेड टू कन्वे कि मेरा जर्नी से कि क्या हाँ, होना चाहिए, वो so मैंने that ही was कर दिया। concluded. ओके, Cool. So have a good journey ahead, ओके, Manish. You have a very bright future. Live your ओके, life and enjoy it. Okay. ओके, चलिए, थैंक बाय यू, बाय एंड टेक केयर। बाय। यू विल गेट द वीडियो वेरी सुन। ओके, ठीक है, एक ओके, बार एडिट हो ओके, जाएगी तब आपको मिल जाएगी। कूल। ओके सर, ओके, बाय बाय, टेक थैंक केयर।